देखिए टिस्का चोपड़ा जी एंट्रेंस कर चुके हैं और मैं यहाँ कवर करता हूँ आपके लिए दोस्तों। अरे कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों टिस्का चोपड़ा मैडम तो आ चुके हैं और निकाल दिया। ठीक है, अनिल कपूर साहब अभी आने वाले हैं। हाँ दोस्तों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे ट्रैवलिंग चैनल #जिप्सी मुसाफिर 113 में। और हम लोग यहाँ पर कला एकेडमी में हम लोग खड़े हैं, जहाँ सुपरस्टार अनिल कपूर जी यहाँ आने वाले हैं। और यहाँ काफ़ी पुलिस का आप सिक्योरिटी देख सकते हैं। और यहाँ पर फैंस देखिए कितना शानदार इंतज़ार कर रहे हैं, लाइन लगा के मैं कवर करता हूँ आपके लिए। ये कुछ इस प्रकार मैं आपको और ऊपर से दिखाता हूँ, एक लंबा सा लाइन है यहाँ एकदम अपने फेवरेट कलाकार का एक झलक पाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं ये कवर कर रहा हूँ, देखिए आप। और पुलिस भी काफ़ी मुस्तैद है और काफ़ी सिक्योरिटी है यहाँ पर। रेड कारपेट में जैसे ही अनिल कपूर आएंगे मैं कवर करके दिखाऊंगा आपको। मैंने पहले आपको नज़ारा दिखाया कि जैसे बाहर का भी देखिए, बाहर भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बाहर का भी मैं कवर करता हूँ। हम लोग कला एकेडमी के अंदर हैं और लोग बाहर से इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए आप। और कुछ ही मिनटों में अनिल कपूर जी यहाँ आने वाले हैं और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहले मैंने आपको नज़ारा दिखाया, देखिए कितनी लंबी लाइन है। और ये तो सामने की लाइन और पीछे तक आप कवर करेंगे। और ये बाहर भी उतने ही लोग खड़े हैं जितने अंदर। इसके बाद अनिल कपूर जी का एक छोटा सा लेक्चर होने वाला है, तो सभी लोग उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे ही अनिल कपूर जी आते हैं मैं आपको उनके एंट्रेंस का वीडियो भी कवर करूँगा मैं। तो आप लोग अंत तक यह वीडियो देखें अगर आपको अनिल कपूर जी का एंट्री देखना है। आप हमारा चैनल देख रहे हैं #जिप्सी मुसाफिर 113। दोस्तों यहाँ बहुत ही बढ़िया क्षण है, अनिल कपूर साहब आ चुके हैं और देखिए इनकी गाड़ी मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। ये वाइट गाड़ी है, यहीं से यहाँ उतरने वाले हैं। और देखिए आप यहाँ पर मैं पूरा आपके लिए कवरेज कर रहा हूँ और ऊपर भी उठाऊँ। हाँ, ये अनिल कपूर साहब उतर चुके हैं, मैं आप देख सकते हैं। ये है, आइए दोस्तों देखिए। Ladies and gentlemen, hold your breath for the one and only, the legendary Anil Kapoor!
देखिए दोस्तों, अनिल कपूर साहब यहाँ खड़े हैं। तो दोस्तों देखा आपने अनिल कपूर को लगे क्या दीवानगी आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। अभी भी कपूर साहब है यहाँ। मैं कोशिश करता हूँ कवर करने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों कितनी भीड़ है। और कपूर साहब अंदर जा चुके हैं। मैं बाद में कोशिश करता हूँ उनको कवर करने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। चलिए। Constantly reinventing himself, fit and fabulous, the indefatigable Mr. Anil Kapoor. The variety of roles Anil Kapoor has played has been mind-boggling, and there is virtually no genre he has not done, no role he has not played. Anil Kapoor has to his credit several iconic characters like the spoiled brat Lakhan, the notorious goon Munna, the adorable gangster Majnu Bhai, and many more. The other guest tonight is an Indian film director, writer, producer, and master storyteller, Mr. Anis Bazmi. In the industry, since more than 3 decades, Anis has shaped many blockbusters as writer or director like Pyar To Hona Hi Tha, No Entry, Welcome, Sing Is King, etc. He is the true comedy king of Bollywood. To take this shift forward, we have author, film producer, and award-winning actress, Ms. Tiska Chopra. Now, I would like to request to come on the stage Sri Chaitanya Prasad, Additional Director General, Directorate of Film Festivals, Mr. Amit Satija, CEO, Entertainment Society of Goa, and Mrs. Nidhi Satija, Joint Secretary, Director PPP and CEO, IPB in Government of Goa, to give mementos to our esteemed guests.
झक्कार भाई Thank you, everyone. We will begin the session now, and for this, I hand over the mic to Mr. Chopra. Good evening. No. Thank you. वो सब ठीक है, but good evening. Thank you. I can feel that आप लोग में जान है, because our conversation is going to have a lot of fun. ऐसा reaction नहीं चलेगा. Okay? One more time. Everyone together. Good evening. I like it already. You know, making films is not easy. Every single thing that you see on the screen, एक छोटा छोटा सेकंड, अगर हीरोइन के बाल उड़ रहे हैं, तो वो एक पंखा रखा गया है, हवा खुद से नहीं चल रही. अगर एक पेड़ हिल रहा है, तो वो कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नीचे बैठ के उसे हिला रहा है. So every little second that is put there in film is deliberate and it is put there. बहुत सारे man hours लग जाते हैं. Grading, coloring, editing, post-production, hundreds and thousands of things. And people are away from home. So people try and work with people who feel like family. There are many, many famous collaborations between actors and directors, actors and editors, cinematographers, Martin Scorsese and Leonardo DiCaprio, and before that, Robert De Niro, Pedro Almodovar and Penelope Cruz, and back home in India, ANIL Kapoor and They have done not one, not two, not three, not four, not five, not six, but 10 films together. And they have all been smash box office hits. So here is this great collaboration, two people, wonderful artists, and I'm really honored and thankful to IFFI, to the Ministry of Information and Broadcasting, and my very, very, very dear friend and mentor Anil Kapoor, who asked me to moderate this panel. So I'm going to take out my parchi. I'm a school principal's daughter. मैं बिना papers के काम नहीं करती. फर्रे लेके आती हूँ. So here are my questions. Anil sir, you've done so much. You've done films from Ram Lakhan to Beta to Pukar to Bulandi, everything. What is the one thing that you haven't done and you want to do? Googly? Of course, good evening. अरे मजा आ गया यार. क्या हम लोग के पास कोई पर्ची नहीं है. Anish bhai and myself, we don't go with पर्चीज. करेक्ट है ना करेक्ट? हाँ भैया सब जगह से होने वाला है. तो जिसका जी पूछ रही हैं, she's asking me कि what is something which I've never done. See, one lifetime, to be honest with you, is not enough for me to really fulfill all my dreams. I'm very fortunate, very blessed that I had, opportunity of working with some great actors, great actresses, phenomenal writers, and fantastic directors. And I'm sure everybody knows that filmmaking is it's completely a teamwork. But I have always been a director's actor, and I'm very proud to say that.
And I totally, from my bottom of my heart, I say that director is the captain of the ship. You know. तो लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो 50 फिल्में अनीस भाई के साथ और करना चाहता हूँ. इतने किरदार इनके अंदर हैं अभी भी कि ये लिखते जाएंगे, ये डायरेक्ट करते जाएंगे, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत सारी और फिल्में करेंगे साथ में. You know, because you know, his pen is magical. He writes from his heart, and it's all original, absolutely original. The humor, the comedy, and so I'm looking forward. So if you ask me anything else, there is so much more for me to do. I've never been so hungry, and you know, at the moment this is 2019, almost getting into 2020. I started my career in 1977. I faced the camera for the first time. It's almost more than 40 years, and I've never been so hungry the way I am. So that's the answer. But anyone, I'm sorry, I can push my luck with you. I know that. Not very many people can, but I can. So I'm pushing my luck and I'm asking you कि अगर एक वो किरदार है जो मन के अंदर एक ख्वाब बन के घूम रहा है कि ये किरदार मेरे को जरूर करना है, you know, something that is like, you know, kind of obsessed you, or let me put it another way, is there a film that you've seen and you thought कि ये character अगर मुझे करने मिलता है, Indian or international, then what would that character be? I think all the films, you know, I'm a great admirer of. In the past, and you know, admired all the people, all the, you know, all the audience and the students over here. There are a lot of students of cinema over here. Oh, great! So I'm sure you're aware of James Dean, Marlon Brando, from the West. I've been a great admirer of them. James Dean for his style. He died at a very young age. He died, you know, in a very fatal car accident at the age of 24. But he did about 3 to 4 films, and I've seen those films again and again, like Rebel Without a Cause, East of Eden, Giant. Then of course I saw a lot of films of Brando, like Streetcar and Desire, and of course The Great Godfather, and so many of his films, Viva Zapata. The list goes on and on. His style, you know, he was one of those realistic actors, you know, and real actors. And of course, when I grew up, started watching film, I was very in awe of Dilip Kumar Saab, all his films, Raj Kapoor Saab, Dev Saab, you know, his style. Then of course came Shami Kapoor, you know, his style, and so many others. And then of course the younger generation, you know, all the films which Tom Hanks has done, like Philadelphia, and you know, all the kind of commitment, the kind of work he has done, Castaway, Forrest Gump, and then you know, Al Pacino, his films, and Justice for All, Scarface, you know, these kind of roles, and of course then came the great Daniel Day-Lewis, you know, Daniel Day-Lewis, you know, and all his films. And the last film of his which I saw was Phantom Thread, where he plays a master, a tailor, you know. And the kind of detailing, the kind of work he has done in that kind of film, I would love to do something like that. You know, all the roles which he has done. You know, the way he did Lincoln. If I get a character which is a historic character, which somewhere, obviously historic character is a certain kind of character where your face has to be some resemblance has to be there. So if I get that kind of a character, you know, if I can work on it, and if I have a writer and a director who can, you know, I can work under and learn from him, and I would love to do those kind of films. And of course, all the films Nasiruddin Shah has done, like Sparsh, I would love to do I've never played a blind man in any of my films. I'm looking forward to it. There are so many scripts which have come but have not been really satisfied. Matter of fact, I spoke to my international agents and my friends over there. I said if I can get the adaptation rights of Scent for Women, I would love to do it. Oh yeah. Yeah.
Al Fabulous. Pacino's great scene he had where he talks about not about the academic education, which is not important. What is important is the spirit. That scene which he did in front of the students and the panel which is sitting on the stage is. I just keep on watching that scene again and again and again. You know. So all these great actors, Raging Bull. You know, there's so many characters I can do, and today because of the platform which we have, and for y'all, you're very fortunate that y'all can, you know, direct, photograph, watch, consume on so many platforms. You know, not only it's not necessarily the film has to release theatrically. Today you can. आज हम लोग यहाँ में से यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं कि कहीं आपके जहन में कोई थॉट आता है और आप उसे स्टोरी, एनी स्टोरी which comes to your mind, you can tell a story and you can tell it in such a way that just with a click of a button the whole world can see it. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हम लोग तो ज़रा सीखने के लिए पुणे इंस्टीट्यूट जाते थे कि वहाँ जाके हम लोग फिल्में देखें, पुणे आर्काइव्स में फिल्में देखते थे, फिर अपनी अपनी यू नो फोटोग्राफ्स लेके घूमते थे, लोगों को बताते थे भैया मेरी फ़ोटो देखो, मुझे काम दो, यू नो फोटोग्राफ्स, एंड देन केम द यू नो लिटिल क्लिप्स एंड देन रश उसको काट के दिखाते थे. आज आप यू कैन सेंड इट, यू नो कैन सेंड योर ऑडिशन ऑन अ व्हाट्सएप, यू कैन डू एन ऑडिशन ऑन अ स्काइप, यू नो. So it's great times for all of you all. So it's great time, if it's a great time for you all, that's a great, I'm still a student of cinema. I still consider myself a student. And sky's the limit. So, you know, today anybody sitting over here, I can observe some character. मुझे कुछ उसमें characteristics नजर आएगी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वो कैरेक्टर करना चाहता हूँ. यार वो लड़के को देखा है जिस तरह वो बात करता है, वो आदमी, वो उसका बाप, वो उसका ग्रैंडफादर, वो उसका चाचा. You know, like for example, I did Mubaraka with Anish Bhai. And when I did Mubaraka, I had an uncle called J.C. Suri, who used to live in Delhi. And, you know, so there are a lot of streaks which I took from him. I had so many uncles who were, you know, the character, the way I played in Mubaraka. There is, you know, it's then, and of course, Dil Dhadakne I did, you know. तो ऐसे छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी आप दोस्त से, यार से, रिश्तेदार से ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें ये एडवांटेज, अनीश भाई और मुझे, हमको ये एडवांटेज है कि हम यू नो वहाँ से हमने शुरुआत की है कि हमने बसों में ट्रैवल किया है, हमने ट्रेनों में ट्रैवल किया है, बस में बैठते थे, 3 बस ट्रेन चेंज करते थे और हम लोग जाते थे, तो तीनों बसों में देखते थे. एक बस में चंबूर से लेकर चूनाभट्टी तक एक आदमी को देखते थे, चूनाभट्टी से लेकर बांद्रा तक दूसरा एक आदमी, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बांद्रा से फिर जू पहुँचे थे, एक दूसरा आदमी है, यू नो, कि उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यार इसका क्या अच्छा, किस तरह ये देख रहा है, किस तरह बात कर रहा है. So real life experiences, real life characters. So you pick up those things from, and then of course you have friends. And today, at the click of a button, you can watch, observe, learn from anybody in the world. So मुझे लगता है today's lifetime is not enough. That there are so many inspirations around. Every time I see, I find some inspiration from somewhere, and want to do it. So I can go on and on. Yeah. अभी क्या है कि आपने पूछा इनसे कि कौन सा एक रोल है जो आप करना चाहते हैं. अनिल जी की ये एक खास बात है. अनिल जी जिस मकाम पर है आज हैं और जिस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद उनके अंदर का जो एक्टर है, आपने पूछा एक रोल, इन्होंने कम से कम, मैं गिन रहा था, 50 रोल गिनाए जो वो करना चाहते हैं. और मेरे ख्याल से यही इनकी एक खासियत है. मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर जो है वो अगर सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ भाई मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तो वहाँ से मुझे लगता है प्रॉब्लम शुरू होती है. अनिल जी में आज भी मैं इनके साथ जब शूटिंग करता हूँ कोई भी फिल्म की, चाहे वो मेरी 7वीं फिल्म इनके साथ है, 8वीं फिल्म है, 9वीं फिल्म है, मुझे ये लगता है कि ये पहली फिल्म है और इनका जो जोश होता है, इनकी जो एनर्जी होती है, और इनके अच्छा ये खुश भी होते हैं, ये बहुत सिक्योर भी होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट भी होते हैं, थोड़े घबराए हुए भी होते हैं, वो हर चीज़ जो होती है जो ऐसा लगता है कि ये पहली फिल्म शूटिंग कर रहे हैं, पहला दिन शूटिंग है. आज मुझे लगता है कि जिस ऊंचाई पे, जिस जगह पहुंचे हैं, उसमें ये एक जो चीज़ें हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है. Anish, you have written 20 films. These films before you directed. No, I wrote about 30-35 films before I became a director. Yeah.
Google Baba has failed us. तो did it become easier? आसानी हो गई